Today I will show you view cube and navigation bar. It's a view cube, okay, 3D view cube. If you want to rotate, shift and middle mouse button, okay, cursor button will go with for rotate or orbit. Okay, here is option called view cube. You can do easily if you can see कर्सर यूज करके आप लोग जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और ऑर्बिट का कमांड से यूज कर सकते हैं ऑर्बिट व्यू for using view cube you can rotate also. From here you can see, if you click here you can rotate everywhere. And here's option called the views, what type of view you want: top view, side view, south elevation, northwest, northeast, back, bottom view, right side view, left side, front side, left side view. Everything is possible in view cube. Okay, and here's a navigation bar. In navigation bar, uh, too many options are available: full, mini navigation, mini tour. If you get full navigation, you can see, like, you can rotate, you can orbit also. Full navigation, it's a full navigation bar. You can zoom also if you click the zoom, and you can zoom, like zoom in and zoom in also possible. And rewind is nothing but previous what I done in the previous. Okay, then pan is nothing but like if you want to move like this, so orbit, you can rotate using orbit. You can center the make the drawing into center, like walk, lock, and up and down also possible. And also here is option called zoom output, like 2x zooms, zoom all to fit. uh, it means if you select the zoom all to fit, it will fit into the screen, and previous pan or zoom you can see here. आप देख सकते हैं इधर, आप बहुत ही आसान तरीके से व्यू क्यूब का नेविगेशन बार के यूज़ करके ड्राइंग को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से ऑर्बिट भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। फ्रंट व्यू भी शो कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं फ्रंट व्यू आराम से शो हो जाता है, राइट व्यू होता है, बाद में 3D में आके कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस में जाके आप देख सकते हैं, इधर स्टेटस बार है, इसको भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, प्लीज़ subscribe my channel if you are interested in more structural videos.